doing well. Now the question is, using Kirchhoffs laws, obtain the equation of the balanced state in the Wheatstone bridge. So the problem is based on the derivation of the balanced state of the Wheatstone bridge using basic Kirchhoff laws, the Kirchhoff voltage as well as Kirchhoff's current law, KVL and KCL. So I have drawn this particular diagram showing the Wheatstone bridge as well as the energizing source, which is the battery here. So this battery is supplying the current to this particular circuit. It is an arrangement of 4 resistors, and these resistors are connected in such a manner they are looking like a bridge. So this is the particular bridge. The resistances respectively are P, Q, R and S. Let the battery is supplying a current I, which is equal to I1 plus I2. The total current is I1 plus I2, and this current goes through this particular node. Suppose this node is A. Now this from this node A, one current goes to B, node B. Let this current be I1, and the current going in this particular branch AD be I2. This is the galvanometer here sensing the current. In the balanced state, the current through it must be 0. Let the current in the unbalanced state is Ig, I subscript J. The current suppose is flowing in the downward direction. Now at the node B, if we apply the KCL, then we can get the current in the branch BC, which comes out to be I1 minus Ig. Similarly, applying the KCL at node D, we can get the value of the current in the branch DC as equal to I2 plus Ig, because the incoming current is I2 and this incoming current is Ig. So this is I2 plus Ig. And finally at the node C, all these two currents merges, I1 minus Ig and I2 plus Ig, and they produce I1 plus I2 current. So this is the whole arrangement. Now applying the KVL in ABDA loop. First applying KVL in ABDA loop. So in ABDA loop, when we apply the KVL, the first term corresponds to the voltage in this branch, which is equal to I1 into P plus the galvanometer current multiplied by the galvanometer resistance. Let the galvanometer resistance is R sub G. So this is equal to Ig R sub G. Then the loop sense is in this direction, that is the clockwise direction. So it is opposite to the direction sense of the current I2. So we have to write this term in negative manner. So minus I2R. This is important because the current direction is shown here and we are applying the loop in this manner. So this is the opposing case. So we put here minus sign and this equal to 0. Now call it as equation 1. This is equation 1. Now using this particular loop BCDB. Now KVL in loop BCDB. So the first voltage term is I1 minus Ig times Q. Then in this sense, and this is a negative sign because this is opposing the polarity. So we get this as I2 plus Ig times S. Then we go in this direction. So minus Ig into Rg equals to 0. This is our equation number 2. Now, if the bridge is in balanced state, Ig is 0. So Ig equals to 0 when the bridge is in balance. Now in this situation, this term becomes 0. This current becomes 0. So this term becomes 0. And all the terms where Ig is present, they become 0. For example, this is 0. And Ig into S, this becomes 0. So from equation 1, the equation 1 modifies as I1P is equal to I2R. Call it as equation number 3. Similarly, equation 2 modifies as I1Q is equal to I2S by putting Ig equals to 0 at each and every place. Call it as equation number 4.
Now, what we do here is we divide equation 3 and equation 4, 3 by 4. So we get I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. Now this I1 cancels with this I1 and I2 cancels with this I2. So the final expression we get is P upon Q is equal to R upon S. So this is the equation that corresponds to the balanced bridge. This is the relationship between the resistances of a balanced bridge, which we have to derive it. So I am explaining this thing in Hindi also. यहाँ पे हमें बैलेंस स्टेट जो है उसके लिए प्रूफ करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंसेस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ सबसे पहले हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है। सर्किट में हमने 4 रेजिस्टेंसेस शो किए हैं पी क्यू आर एस, और हमने यहाँ पे टोटल करंट मानी है I1 प्लस I2। नोड्स को नाम दिया है ए, बी, सी एंड डी। रेजिस्टेंसेस रेस्पेक्टिवली हैं हमारी पी, क्यू, आर एंड एस। करंट फ्लो हो रही है ए बी ब्रांच में I1, ए डी ब्रांच में I2, बी डी ब्रांच यानी कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच में IG। KCL लगाया हमने, किरचॉफ करंट लॉ लगाया है नोड बी पे, तो यहाँ से हमने लिखा I1 माइनस IG। फिर हमने KCL अप्लाई किया नोड डी, तो ये बन गया I2 प्लस IG। उसके बाद हमने KVL अप्लाई किया इन द लूप A B D A। टर्म्स लिखते गए वोल्टेज के, फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ हम गए तो I1P पहला टर्म लिखा हमने। फिर हम इस डायरेक्शन में गए I1G इंटू आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, माइनस I2 इंटू आर। माइनस इसलिए लिया क्योंकि लूप की सेंस क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन शो की गई है इसके अपोजिट मैनर में, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह से हमने अप्लाई किया KVL इन बी सी डी बी लूप में। बी सी ब्रांच जो है उसके लिए वोल्टेज टर्म लिखा हमने I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर ब्रांच में सी डी ब्रांच में वोल्टेज टर्म लिखा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना होगा क्योंकि लूप की सेंस क्लॉकवाइज है और करंट इस डायरेक्शन में डी से सी की तरफ जा रही है, माइनस I2 प्लस IG टाइम्स एस। फिर उसके बाद हमने करंट हमारी क्लॉकवाइज मैनर में अगर मूव करेगी तो ये अपोजिट होगी विद द IG डायरेक्शन, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया। ये हमने पूरी इक्वेशन लिख ली। इसे हमने कहा इक्वेशन 2। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, तो जहां जहां करंट के टर्म आ रहे हैं इक्वेशन 1 2 में उनको हम जीरो पुट कर देंगे। और फाइनली हमारी इक्वेशन जो 1 है वो मॉडिफाई होकर हमने लिखी इक्वेशन 3 की फॉर्म में I1P इक्वल्स टू I2R। ऐसी इक्वेशन 2 जो है हमने लिख ली मॉडिफाई करके इक्वेशन 4 की फॉर्म में I1Q इक्वल्स टू I2S। दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया जिससे हमारे I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S निकल के आता है हमारा। So this is the final result of the balanced state of the Wheatstone bridge. Hope you understand the solution.